व्हाट्स अप गाइस, कुशाल हियर। और अगर आपको याद होगा कि मैंने अपना पहला वाला वीडियो में जो है एक पीसी बिल्ड करा था, 80,000 का बिल्ड था वो गाइस, और उसमें मैंने यूज़ किया था इंटेल का i5 8600k और उसी के साथ मैंने पेयर किया था NVIDIA का GTX 1066G वाला एडिशन। और बेसिकली मैंने उस वीडियो में थोड़ा बहुत बिल्डिंग दिखाया था, मतलब पीसी बिल्ड कैसे करते हैं, और उसको भी बिल्ड किया था उस वीडियो में। एंड लास्ट में मैंने थोड़ा बहुत गेम प्ले दिखाया था, और आप लोगों से मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको डेडिकेटेड गेमिंग वीडियो चाहिए इसके ऊपर तो मेरे को बता सकते हो। और उस वीडियो में मैं ये भी बताया था कि मैं वही सेटअप में जो है 7 गेम्स को ट्राई करने वाला हूँ, और सारा का सारा ट्रिपल टाइटल्स है, बहुत बड़ा बड़ा गेम्स है, लाइक जो पॉपुलर होते हैं, जो डिमांडिंग गेम्स होते हैं, वो सारे गेम्स मैं ट्राई करूंगा, मैंने बोला था। बट फिर साथ से क्या हुआ कि 2 लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया था कि एक जन को तो CSGO देखना है कि CSGO में कितने FPS देता है, और दूसरे बंदे ने कमेंट करा था कि उसको PUBG देखना है कि इसमें PUBG कैसे चलता है। तो यहाँ पे मैंने PUBG मोबाइल तो इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो थोड़ा बहुत अलग टाइप का हो जाता है। यहाँ पे मैंने PUBG PC वाला वर्जन इंक्लूड किया है, और साथ ही साथ मैं CSGO भी इंक्लूड कर दिया है। तो आज के वीडियो में मैं कुल मिलाकर 9 गेम्स को ट्राई करने वाला हूँ इंटेल का i5 8600k और इसी के साथ साथ NVIDIA GTX 1060 में। बट यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये है कि मैं सारा का सारा गेम्स जो है पहले ही रिकॉर्ड करके रख दिया था, मतलब मैं यहाँ पे कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्स यूज़ नहीं किया। यहाँ पे मैं डायरेक्टली कैमरा से शूट किया, वो भी अपना मॉनिटर का पिक्चर जो है शूट किया। और ये मैंने इसलिए किया कि अगर आप गेम खेलते टाइम उसमें थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग वगैरह करते हो तो गेम का FPS थोड़ा सा भी हो सकता है आपका ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि हार्ड डिस्क सीरीज जो है ज़्यादा खाते हैं। बट बाद में मैंने SSD के साथ ट्राई किया ये। बट यहाँ पे मैंने 7 गेम्स को जो है डायरेक्ट कैमरा से रिकॉर्ड किया, अपना मॉनिटर को रिकॉर्ड करके कुछ इस तरह से। और लास्ट जो 2 गेम्स है जो कि आपने रिक्वेस्ट किया है वो मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है, क्योंकि पहले ही मेरा वीडियो जो है शूट हो चुका था। और फिर मैंने सोचा कि काउंटर स्ट्राइक और वो जो PUBG है उसको भी डाउनलोड करके खेल के देखते हैं कि कैसा FPS देता है। काफी डिसेंट सा FPS प्रोवाइड कर रहा था, इवन अल्ट्रा प्रीसेट पे। तो फटाफट से चलो गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि ये पीसी कैसा परफॉर्म करता है गेमिंग में। और लेट्स गेट स्टार्टेड।
तो जैसे कि आप सबने देखा कि मेरा जो चॉइस था वो काफ़ी मतलब ऐसे ऊपर उठ गया है, मतलब ऊपर उठ गया नहीं, ऐसे टिका हुआ है। और ये बिल्ड जो है आपको गेमिंग करा सकता है 60+ FPS में। आप देख ही सकते हो सारा का सारा गेम्स जो है 60, 70, 80 इवन 100 तक चला गया है। और बेसिकली अगर मुझसे पूछो तो मुझे कोई उम्मीद नहीं था कि ये 1060 जो है इतना अच्छा परफॉर्म कर लेगा इवन अभी के मार्केट में। बट हाँ, मैं यहाँ पे 900p का मॉनिटर यूज़ कर रहा था, तो थोड़ा बहुत अगर आप 1080p में खेलोगे थोड़ा बहुत FPS डिक्रीज भी हो सकता है या फिर थोड़ा बहुत इंक्रीज भी हो सकता है, नहीं पता है। बट मैं यहाँ पे 1600p का मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप भी एक 18000 में पीसी बिल्ड करना चाहते हो तो ये जो स्पेसिफिकेशन मैंने दिखाया है वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। बट अगर आपके पास थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप RTX के साथ जा सकते हो, वो एकदम ऐसे धमाल मचा देगा। बट मैं यहाँ पे 1060 यूज़ करा है क्योंकि मेरे पास पहले से ही था 1060। और एक और पीसी बिल्ड जाने वाले गाइस इस चैनल में RTX 580 के साथ, जो कि आप देखना बिल्कुल भी मत भूलना। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड दैट वाज प्रीटी मच इट गाइस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसे क्वालिटी कंटेंट्स के लिए। एंड मैं आपसे अगले वाले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।